is Vikas and on behalf of Yuvaap, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट विद a very interesting topic, which is learning with creativity. So before starting, do like, subscribe, and share our page on whichever platform you're watching, be it Facebook, Instagram, or YouTube. So do like and subscribe so that you don't miss any of the update from our side. So coming back to our interesting topic, which is learning with creativity. So as the saying goes that it takes all the running you can do to remain at the same place. And if you want to reach somewhere else, you have to run at a double the speed, double the speed. So in today's life, चाहे आप सर्विस सेक्टर में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप it can be any profession. To remain at the same place, आपको अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को. And to grow further, आपको you have to increase your learning, you have to add up new skills, you have to learn something new. So जब लर्निंग इतनी important part play करती है आपकी ग्रोथ में, so I think learning should not be boring. So that is why we have our special guest, Dr. Anuradha Joshi, who is a founder and director at Creative Academia, and who has Thank a rich you. experience of 25 years in this field. Welcome to Yuvaap, ma'am. Please हमारे Thank गेस्ट को you. बताइए कैसे हम इस लर्निंग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के we can do something new and start learning new things. Yes, definitely. Thank you so much, Vikas, for introducing me. So, good morning, India. How are you? Good morning. How's the Good Josh? morning. Good morning. Yes. So, dear friends, welcome to this electrifying and galvanizing session of creativity in learning. Yes, I hope everyone is ready for the session. So, should we start with something like this? What is creativity in learning? Should we go Yes, ahead, ma'am. Sure. Vikas? Yes, ma'am. Yes, obviously, ma'am. Okay, so dear friends, I would just like to mention here that creativity is something which actually deals with originality and it deals with novelty and effectiveness in our education system. So, it is of paramount importance to blend our curriculums with creative activities. And of course, creativity is just not something like a whim or a whimsical thing, it's not a whimsical construct. We need to, if we are educators and teachers, we need to plan our activities and we have to sync it with the learning objectives as well as the outcomes. Okay. For example, if you are introducing stories in your lectures, Mhm. it can be any story related to that particular topic. So you need to be sure that that story has to be contextual, it has to be relevant, and it should bring a churning in the minds of the recipients or our students, and in turn bring good academic outcomes. Okay, so this is just a very small generic example which I'm giving using narratives or stories in your lectures. Okay, Right. so yes, Vikas, Yeah, even in can I you give me remember a during beat my question again here? no. So I was talking about that even in my MBA sessions. So जो आज भी मुझे अपने सारे लेक्चर्स जो याद हैं अच्छे से उसमें हमेशा यही होता है कि टीचर यूज टू नरेट समथिंग न्यू एंड कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके दे यूज टू नरेट समथिंग जो कि एक ऐसी स्टोरी जो लिंक होती है सब्जेक्ट से एंड दैट इज Exactly. वो अभी तक याद है वो चीजें बाकी तो नॉर्मली पढ़ते हैं सारे तो वो तो नथिंग मतलब कुछ भी याद नहीं है अभी लेकिन बिल्कुल समथिंग जो सही कि बात अलग है. होता है राइट अगर आप जैसे बच्चों को सपोज यू आर टीचिंग देम अबाउट एन एक्सीडेंट, ओके, द राइट हाउ टू ब्रिंग इन हेल्प एंड फर्स्ट एड इन एक्सीडेंट, उसके पहले यू विल हैव टू bring a set induction in their minds like what is an accident, what are the types of accidents, वो आप कैसे बताओगे? You can just put a PowerPoint presentation and एक rote learning way में आप बताओगे बच्चों को. करेक्ट You can use a story, you can use a film clipping there, okay, you can use an audio there, you राइट can do a brainstorming with the students, with the children, that what do you think कि accident किस तरह के होते हैं, कहाँ होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, and then you actually go on to the solution. करेक्ट Majority of the times what happens that teachers are just getting their PowerPoint presentations, yeah, it's usually a monologue. Creativity यस is a मोस्टली multi-dimensional construct, remember. Now, राइट creativity, since it's a multi-dimensional thing, and all of us are aware, कि universe का secret क्या है? It's diversity.
So why not apply diversity in our education? Why not? Why should we just be focused only single track or stereotype Right, education? Right? right, ma'am. Can't we Right, galvanize the students' minds or brains by bringing in lot of these activities in the classroom? I have yet to see majority of the teachers using brainstorming in their classroom. उनको पता है क्या लगता right, है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे टॉपिक से ऐसा नहीं है right. दैट And सिंपली moreover, नॉट द केस they are also afraid कि कहीं ऐसा कोई different topic ही ना आ जाए जो शायद देना है वो cover ही ना कर पाए. राइट राइट So, राइट मैम, राइट जैसे इस डिस्कशन पे अब जैसे ये पॉइंट आया है तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, डू यू फील कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज लैकिंग समथिंग जो कि टू मतलब ऑन दिस फील्ड आई मीन जस्ट अ सेक देयर इज सम साउंड पोल्यूशन हियर एक्सक्यूज मी उनको बोला साउंड कम कर दो हाँ हाँ यस मैम. just give me a minute just give me a हाँ, second श्योर because श्योर yeah श्योर मैम. you can edit so, आखिर यू कैन टेक ए 1 minute ब्रेक इन बिटवीन. yeah break ले लो हाँ, 1 minute ब्रेक. yeah okay वेलकम बैक मैम. yes yes Vikas yes you can continue यस. your question Yes, yes so I was just asking that since you were discussing education, like आजकल कैसे education होती है, that people are not doing brainstorming and everything. So just I just want to take your idea on this that आजकल के education के system में do you believe कि something is lacking that people are not doing something creative to make sure that जो बच्चों का दिमाग है सही से develop हो उसके लिए मतलब yes do you think something is lacking in our system? yes definitely this something what is lacking in our system is that teachers are not ready to take the risk. Right, You know, one of the prime things for bringing or blending creativity in our curriculums is that teacher should be a risk taker. right, Teacher should try different combinations that how I can make my that 1 or 45 minutes of lecture very. I'll just give you one example. Just I'll give it. All of you are aware that I am a medical professional. I've been into right. this creativity for last 25 years. Okay. Right. Now I teach about medicines, right? Is there a teacher tell me now this is a patented thing, okay? This creative art which I am doing, this is one of the art from the toolkit which I have, that is Mhm. autobiography of medicines. Have you ever heard a paracetamol speaking about its life? Have No, you heard never. Seems paracetamol very interesting. or amoxicillin speaking about its life, that see who am I was born in this laboratory, these are my parents, you know? We are Mhm. adding life to the objects. Right. Okay, so we are making our entire content lively for the students. That is creativity, and that actually provides oxygen to the brain, which actually helps in the neuroplasticity. Now neuroplasticity, viewers, let me tell you, for our continuous evolution, neuroplasticity is a very very important thing. If we are progressing in life, if we are having we are doing well in life, if we are learning new things, we are bringing in
activity of the brain. Otherwise, it's like an iron which will just get rusted if you do not do anything new. And all of us are aware that change is one thing which is always constant. Yes? Correct. Agreed or not? Agreed. Totally है ना? agreed. Change हमेशा it's a constant entity. So why are we not open to change? Why not? Right. We all are I aware think that in future years, artificial intelligence, as such, AI is dominating. It's going to dominate every one of us. correct. Almost in every But field. yeah, in every field. But then artificial intelligence will not be able to do something creative or something which is catering to critical thinking. Correct. Right. And there the human being की जो importance है, humanity, creativity, critical thinking, that will come into play. And that's why we need to save humanity by bringing creativity in classrooms. I've just given you one example, autobiography. In my toolkit, I'm having 100 such examples. I'll give you some other example. Chalo. I have made a quiz session by bringing in snakes and ladder in higher education. Now, snake and ladder is something जो हम बच्चे थे तब हम खेला Bachpan करते थे. में. Remember? Yes, yes. So हाँ can जी. we not think bringing in quiz in medical education or higher education by bringing that replica of snake and ladder? We've done that. I hired a US professional. He prepared it for me. जब मैं स्टैनफोर्ड में कोर्स कर रही थी on this thing creativity, I made that and I got scores based on my creative thinking and innovative product. Right. Okay. It seems very interesting, right? Yeah, it's very interesting. And yes, ultimately, जैसा आपने पूछा, brain. See, brain is the epicenter of our being. And of course, brain से आगे अगर हम beyond जाते, it's the mind. It's the mindset. So why not work on the mindset of the children, rather than, pushing them towards such things, pushing them for outer engineering. Creativity helps in inner engineering. जैसे कि सदगुरु भी हमेशा बोलते हैं, he always emphasizes on inner engineering. Correct. When you are creative, when you bring in creativity in your classrooms, you open up the each and every caverns of of your cells, because you start thinking, and thinking is so important for our well-being, for our brain. Otherwise brain rust हो जाएगा, पड़े पड़े stagnate हो जाएगा. It will not be able to think beyond. और आजकल के जमाने में things are changing at such a fast pace, so we need to bring in creativity. Okay. Yes. तो मैम, वन थिंग आई वांट टू, आई मीन जस्ट अभी मेरे दिमाग में ये आया, जैसे कि आप यू आर टेलिंग मी दैट आप स्टूडेंट्स को टू स्टार्ट विद क्रिएटिव लर्निंग विद न्यू क्रिएटिव आइडियाज. Yes. तो अब somebody who has already done his masters, I mean who is already into settled in this field, अब ये उनके लिए is it fine if they try with these new ideas, और ये सिर्फ you have to start with the I mean basic, जब बच्चे होते हैं तभी start करना पड़ेगा हमें, या फिर you can start at any age? See, this, as मैंने पहले ही बताया, it's a diverse field and it can be applied in any and every field. And I myself am running programs on creative teaching, on creative learning, on discovering oneself. I'm running all these programs. If anyone is interested, can definitely contact me for that purpose. Because for this, I have written a lot of papers. I'm having more than 50 publications on creativity. I have met, I think, more than 10 to 15 international people who are actually doing work in creativity in the world platform. So this thing definitely needs to be trained. Somebody who is interested in creativity and learning can contact me directly or indirectly directly via you, and Yes. I can help you scaffold the various steps of creativity. जैसे मैंने बताया, creativity is basically originality, effectiveness, and novelty. It should actually be able to add value to the life of a human being or life of a user. कोई भी चीज हम, चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो डाइवर्जेंट थॉट्स आते हैं, पर उसको हमको बाद में कन्वर्ज करना पड़ता है. कन्वर्ज इन द That is सेंस, important. एग्जैक्टली, काफी सारे थॉट्स आए, चलो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. जैसे मेरे माइंड में एक टॉपिक में लेती, मेरे माइंड में 10 थॉट्स आते हैं,
क्या मैं क्लास इस तरह से ले सकती हूँ सर? बट देन आई हैव टू बी अवेयर ऑफ माय ऑडियंस, मेरे पास कितना टाइम है, इसका आउटकम क्या होगा? सो ऑल दैट नीड्स प्लानिंग एंड ब्लूप्रिंटिंग, and that is where I can help the educators, be it in school, be it in colleges. Definitely I can help the educators how to go about it, how you can blend these techniques in your curriculums. Okay. Okay, so before moving on to next question, I just want to tell viewers if you have any questions for Anuradha ma'am, please आप अपने इधर Facebook, YouTube जिस भी लिंक पे आप देख जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, start posting your questions so that we can pick up with Anuradha ma'am. And ma'am, I have one question that how does this creative learning enhance the future aspect of jobs in kids? So somebody Yes. has asked me this, so Hmm. if you can please. See how it will enhance. Now I'll just give you an example. Everyone must have heard this terminology, disruptive innovation. Yes. Disruptive innovation is a product of creativity. When each one of us was faced with COVID, with Corona, Mhm. the disaster, everyone was thinking how to sustain, how to bring up. The education system was in shackles at the time of Corona. But you see, maximum people earned from online teaching, online learning during the time of Corona. And that Yeah, is disruptive education. Yes. innovation, you know. So creativity, actually, there the creativity was applied. And if you see, there is one of my papers, if anyone is interested, I'll be sending that how there are so many different and infinite platforms which are showcasing कि online learning आप कैसे कर सकते हो. Okay, apart from only हम पहले Zoom meeting and Google Meet की बात करते थे, पर अभी there are so many platform. There is Moodle is there, there is Blackboard is there, then we have the concept making apps are there. Everyone who is interested, who is wanting to progress, is using these apps. Globally, when I recently finished my fellowship from Stanford, and there they introduced us to so many apps. Now this was possible only in online learning phenomena. I can't even imagine going to Stanford and doing my course, but this is a consequence of this COVID-19, that I could do that course online, and I have earned my degree and certificate also. So remember that in future, if you are going for an interview, I think that a person who is having more creative potential, या जिसका creativity index high होगा, that person will be only hired. Otherwise, rest will be fired. Right. That is In for last sure. 2 3 years, yes. That is for sure. If you do not have the potential or the competency to galvanize your audience, engage your audience, कुछ नहीं होने वाला है. Nothing will happen. Yes. In You last two need to three years, add please. I value mean, to yes. each and every child. How the value is added? By bringing creativity, by bringing critical thinking in classrooms, rather than only teaching in a monotonous or a rote learning way. So academic monotony actually kills, actually rusts the brain. वो हमें नहीं करना है. And that is what I saw in Finland. When I went to Finland, when I visited the schools at Finland, I actually saw the creativity mushrooming there. At every level, there are groups of students at different desks, and teachers are bringing in so many techniques according to their learning styles of the students. I, in India, I have not seen such a school. Abhi tak I have not seen. I have yet to see. Right. Okay. And you know that Finland के students में जो PISA scores होते हैं, they are so high. Highest क्यों होते हैं इन बच्चों के? इसलिए होते हैं. आप वहां जाके उनके क्लासरूम्स में देखिए, they have a teacher and also they are having a psychology counselor. दोनों साथ में synergistically work करते हैं. For them, the brain development is so important. So why can't we adapt all this? India mein to there are so many possibilities. It's such a richly inherited culture we have in India. I'm so Right. proud to be an Indian, And the center which I have, it is going to be catering to all the roots, the Vedantic life of living, the scientific reasons why we should do that, why we should, even in the food. How many of us are knowing?
the correct way of drinking water, the correct time of having food. Don't you think कि छोटे बच्चों को भी ये बताना जरूरी है? जरूरी नहीं कि बाद में ही उन्हें पता चले, बचपन से ही teachers should inculcate all these things. Financial literacy, health literacy. Where is this? Where is this in the curriculum? Yeah, it is lacking, right? Correct. It's absolutely lacking. और आज सब Hmm. फिटनेस की बात कर रहे हैं. But fitness has to start from the birth. In fact, from Mhm. preconception. जब conception होता है मदर का, तभी से fitness start हो जाना चाहिए. Yes. So we are focusing on that also. We have some certain session for everyone, and we have started our focus on health, and that's why we have started this Yuvaap. Yes, So I have witnessed that, and I have seen how you have, the way you are preparing all those videos and all, and I'm 101% sure that the entire audience, be it nationally or globally, they are going to be so benefited by your app. It yes, is actually the need of the hour, because it is the need of the hour. I'll tell you. yes. So when we started this, that one of my mentor told me that there are three industries which are lacking currently in India. One is financial, and one is education, and one is health. So, Yes. uh, I mean, I already had an idea. So education was totally revived in last 2 years when this Corona thing was going on. So everything has totally changed. People never wanted to come online for online classes, लेकिन अब ऐसा हो गया कोई फिजिकल क्लास में जाना ही नहीं चाहता है, ऑनलाइन ही चलता है. इवन इन ऑफिस जूम पे ही मीटिंग्स होती हैं सारी, फिजिकल मीटिंग करने नहीं चाहते हैं. प्लस ट्रैवल वगैरह का टाइम भी कितना बच गया. अब मेरे को अगर बॉम्बे में मीटिंग करनी है तो जूम पे 2 मिनट में हम कनेक्ट कर सकते हैं. कितना जिससे अच्छा हो पहले गया, हमें फिजिबिलिटी कितनी हो गई ना. राइट It's so राइट feasible, it's constructive as well. It राइट resonates with the recipient and the person who is, involved in the meeting. So, if we go to see, there are so many benefits of this disruptive innovation, and this is what is this? This is a true example of creativity. करेक्ट. अदरवाइज हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते कि यार कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं जा नहीं सकते, मास्क पहन के ही बैठे रहना है, नथिंग कैन हैपन. बट इट हैपेंड, एंड नाउ दिस इज ओनली डोमिनेटिंग द मार्केट. इसने पूरा हाईजैक कर लिया मार्केट को. ऑनलाइन एजुकेशन तो इट हैज टर्न अपसाइड डाउन इन लास्ट 2 years. Yes, if somebody wants to have the best mathematics teacher in the world, चलो वहां जाने की भी जरूरत नहीं है. टीचर हु इज द बेस्ट मैथमेटिशियन, आप पे करिए, you are connected with that person online. That's it. Correct. What else do you need? Correct. Right? Yes, ma'am. So, So, yeah. So I have one question in my comment that how to use this idea of creative learning for senior education. Very for similar to for senior education. मतलब जैसे कि आप बच्चों के लिए करते हैं for seniors, maybe in colleges and maybe in post graduation. कैसे यूज कर सकते हैं इसको हम? see, basically, creative learning जो है अभी, this what you are asking, senior education is actually the higher education, है ना? So higher Yes, correct. education में creativity is still in a very nascent stage. अगर आप लोअर एजुकेशन या किंडरगार्टन या फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड से मे बी सेवन स्टैंडर्ड तक देखोगे, थोड़ा बहुत इन सम पॉकेट्स आई कैन सी क्रिएटिविटी इज बीइंग अप्लाइड, बट वो भी प्रॉपर वे से नहीं अप्लाई हो रही, जैसे मैंने बोला, बिकॉज आई एम अ मास्टर इन दैट, सो आई कैन हेल्प पीपल स्ट्रक्चर एवरीथिंग. बिकॉज हमको मालूम है कि लाइफ में कोई भी चीज करने के लिए यू नीड स्ट्रक्चरिंग, यू नीड ब्लू प्रिंटिंग. ठीक है. एंड जैसे कि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ इस बात में, दैट प्रोग्रेस हैज लिटिल टू डू विद स्पीड, इट हैज मच टू डू विद द डायरेक्शन. ठीक है. So that is something on the lower education. Now coming on to your question, higher education. Higher education में क्या होता है कि जो teachers हैं, educators हैं, they think that education should be very serious, and they don't realize this कि education को जितना हम free flow रखते हैं, उससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बच्चों में कम आते हैं. ठीक है. जितना ज्यादा हम उसको वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बंद करके रखेंगे, इट विल नॉट वर्क. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. ठीक है. सिंस आई एम इन द हेल्थ केयर सेक्टर, तो मैं हेल्थ केयर का एग्जांपल आपको दूंगी. तो सपोज मैंने क्लास में किस स्टूडेंट्स को हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ाया. ठीक है. I am teaching them in a monotonous way. Suppose this is one educator who is teaching them by the PowerPoint lecture. पढ़ा रहे हैं आप, hypertension कैसे होता है, BP क्या हो रहा है. ठीक है. There's another creative teacher
who brings in some case studies of hypertensive patients. Cases, proper life cases. You see the difference वहीं पे आने लगा. जब आप cases लाते हो patients के, it actually hits the emotional component in that of the brain. जहां पे आपने इमोशनल एरियाज ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के एरियाज है जो इमोशंस को केटर करते हैं, वहां जब आप हिट करने लगते हैं, टारगेट करते हैं, तो डेफिनेटली द लेवल ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस. व्हाट आर वी एक्चुअली वांटिंग इन एजुकेशन? व्हाट डू वी वांट? व्हाट इज आवर एम? सॉफ्ट कंस्ट्रक्ट्स में तो हमारा एम यही है ना कि हमको उनमें इंटरेस्ट लाना है, मेक इट मोर एंगेजिंग, मेक इट मोर मीनिंगफुल, है, सिग्निफिकेंटली मीनिंगफुल, एज द साइंटिस्ट ऑलवेज से. तो ये सब करने के लिए यू नीड टू ब्रिंग लाइव केसेस. व्हाट आई डू, मैं कई बार हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के इंटरव्यूज भी लेती हूँ और वो बच्चों को दिखाती हूँ कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स कितने परेशान रहते हैं कि मैम हमको पूरे दिन दवाई लेनी पड़ती है, हम एक टाइम भी भूल नहीं सकते मेडिसिन. एंड देन आई आस्क द स्टूडेंट्स, इन लोगों के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है? व्हाट कैन यू डू? तब ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू होती है क्लासरूम में. ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद फिर हम एक आइडिया पे कन्वर्ट करते हैं. फिर मैं बोलती कि चलो प्रोडक्ट बनाओ, नाउ मेक अ प्रोडक्ट विच विल हेल्प योर पेशेंट्स. सो यू सी, क्रिएटिविटी अप्लाई करा. इट स्टार्टेड विद अ chaos. We bought a process in it and then we give a value to it by making a product. आपको पता है 100 स्टूडेंट्स में से 5 या 2 बच्चे तो ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट बना के आपको दिखाएंगे. And you never know, these students will be future innovators. आपको मालूम है विकास, and you must be aware that each one of us, I can say that beyond any doubt, every one of us is having a gift. Universe has given us a gift. It is the duty of the teachers and the parents and the peers to bring out that gift forth, and then the child works on it. This is not happening. This is not happening in the education system, and I feel really sad about this. Be it in lower या higher, दोनों में. सो हायर एजुकेशन में हम ला सकते हैं. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया केस स्टडीज का. कोई भी फील्ड ले लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट ले लीजिए, और इफ यू आर टीचिंग समथिंग, सम बायोलॉजी टॉपिक टू द स्टूडेंट, लाइक फोटोसिंथेसिस है, जर्मिनेशन है, bring in lot of videos, bring in lot of live cases to the students. Let them be involved. Involve leads to evolve. अगर ये इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे तो कहां से इवोल्यूशन होगा? नहीं होगा. ओके, Right, ma'am. Perfect. या So yes, so education and teachers plays very important role in bringing out your gift. तो गिफ्ट, यस. क्योंकि आप कभी खुद तो फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे कि आपका गिफ्ट है क्या. तो ऑलवेज टीचर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. गिफ्ट पता ही नहीं चलेगा. यू विल बी ऑलवेज बीटिंग अराउंड द बुश एंड यू विल बी जस्ट एंटवाइंड इन द लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं एंड एवरीथिंग, आपको पता ही नहीं चलेगा. और फिर एक दिन आएगा जब आपने व्हेन यू विल बी अवे फ्रॉम ऑल दैट लाइफ हसल्स, एंड देन यू विल रियलाइज कि यार कितना लेट हो गया. मुझे ना किसी ने बताया, ना मैंने खुद कोशिश करी. टाइम गॉन इज गॉन. 21 years to 45 years is the most productive time of any individual in life. 45 years के बाद अगर आपको कुछ करना भी हो ना, आप नहीं कर सकते because of your health. So why not save the time of the children, of the students? We need to do that. ये हमारे, we are the stakeholders. हमें ही को करना है. कौन करेगा ये? हमको करना है, पेरेंट्स को करना है, पियर्स को करना है. कौन करेगा? who is ready to, who is so gutsy, who is ready to take that courage और चैलेंज लेने के लिए कौन तैयार है? आप बताइए. हमें खुद ही लेना पड़ेगा वो तो. खुद ही लेना है, because lot of people are stuck into that grail, daily monotonous grail में lot of people are stuck. Nobody wants to come out. You know what? सदगुरु क्या बोलते हैं हमेशा कि कितनी फाइनेंस की जरूरत होती है हमें लिव करने के लिए? इतना ज्यादा कुछ नहीं. अगर हम सात्विक खाना खा रहे हैं, सादा जीवन जी रहे हैं, हमको कितना पैसा चाहिए जीने के लिए? जो बाकी का पैसा जो हम छोड़ के जाते हैं आफ्टर आवर डेथ, या बाकी का जो पैसा होता है जो हम बचाते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट,
थोड़ा सा तो यार उसमें से इन्वेस्ट करो इन योर पैशन, इन द गिफ्ट विच हैज बीन गिवन टू यू बाय गॉड. मैं तो वही कर रही हूँ. आई एम डूइंग दैट एंड आई एम रियली डिटरमाइंड कि मुझे करना ही है. I have decided to go school to school, meet principals, meet educators. आपके curriculum दिखाइए, क्या changes लाने हैं उसमें. I am open to that. Anyone wants to approach me, please feel free. Because that is my gift. God has given me that gift और मैं वो gift को waste नहीं होने दूंगी. I'll see to it that it gets disseminated and I'm really honored and thankful to Yuva and Priyanka ma'am and Vidya ma'am and all this Vijay sir for and yes, of course, Vikas, you too. Shruti, Vikas, for bringing in this, session. This is a very, this is a phase of dissemination wherein we are still acclimatizing people of this concept. India में तो मैं बोल रही हूँ, higher education में तो बहुत nascent stage में है. मुझे खुद मालूम है ना, मैंने ये सब चीजें करी है. How much resistance I have faced in life. But resistance is worth it because मेरे students के चेहरे पे जब खुशी है, बच्चे जब खुश हैं तो फिर मैं क्यों ना करूं ये सब चीजें. करूंगी मैं. That is more important. And that is why now the people who were resisting pehle, now they ask me, how should we do this? Tell me, show us the way. Yeah, so that happens. जब आप So successful हो जाओगे, then interesting, नहीं? everybody start coming in. Yes. और ऐसे अभी और भी रेजिस्टेंट लोग भी हैं जिनको नहीं भी सीखना है, करने नहीं, हम जैसे पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ाएंगे. पढ़ाओ. वो रिजिडिटी आपको हर जगह मिलेगी मैम. किसी भी फील्ड में आप जाओगे, हर जगह आपको मिलता है. हर जगह बिकॉज मिलेगी. नोबडी वांट्स टू लीव देयर कंफर्ट जोन. सब Yes. एवरीबॉडी थिंक्स रिस्क लेना कोई चाहता ही नहीं है. जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि ऐसा होता है कि रिस्क लेने से कहीं ऐसा ना हो कि जो चल रहा है वो भी खत्म हो जाए. तो बिल्कुल इसलिए कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता. बिल्कुल सही बोल रहे हैं विकास. एब्सोल्युटली बैंग ऑन. एंड आपको मालूम है, ये जब पॉडकास्ट की बात हो रही थी, आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस. एंड अभी मैंने एक क्रिएटिविटी इसी में कर दी. मैंने क्रिएटिव का एक निमोनिक बनाया. C stands for curious, R stands for resonation, E stands for enthusiasm, A stands for altruism, T for the truth, I is inspiring, V is versatility, and E is energetic. This is creativity. Yes, ma'am. And this is Really creative. originality. Correct. आप हमारे साथ भी शेयर कर देना प्लीज. वी विल डिसलाइक. बिल्कुल, definitely. सो मैम, इसमें से या प्लीज मैम, प्लीज गो अहेड. Yes. So should I take up the next question? Yes, sure. Yes, go So ahead. as you were telling about that, आप अपने course के लिए you were telling that if we can get in touch with you to get our course, I mean to get your course. So हमारा next question इसी से related है कि how long is your course for? मतलब कितना टाइम लगता है इसको सेटअप करने में. And something which is different is that अब ये तो हम प्रोफेशनली, जब से हमने बात स्टार्ट की है, प्रोफेशनली स्टार्ट की है कि कैसे हम अपने करियर में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं. And Priyanka has asked how we can get this creative learning in our family lives. मतलब अपनी फैमिली पर्सनल लाइफ में कैसे इस चीज को हम ला सकते हैं to make it better. So I'll answer one by one such wonderful and wonderful triggers I'm getting. So सबसे पहले the one which you ask कि आपका course कितना, what is the duration and all. Now see, usually क्या होता है, I take it in 3 phases. फर्स्ट तो होता है एक एक्लिमेटाइजेशन सेशन जो कि 1 आवर का होता है. दैट इज अ जेनेरिक वन. उसके बाद if the institutions and the universities and the schools are willing, I usually conduct a workshop. Again, this is generic workshop for 3 hours for the students as well as that of the teachers. Now after that, if they are really interested in each and every technique of creativity, that takes about 1 week. 1 week for one activity. Because उसमें क्या होता है, एक एक्टिविटी जैसे कि ऑटोबायोग्राफी, चलो मैंने बता दिया, एक कॉन्सेप्ट है ना. ऑटोबायोग्राफी का पर डे सेशंस होगा, 2 hour session. One day there'll be an assignment also. One day there'll be an hands-on activity also. Things like that. So that is 1 week for one particular creative activity. So 3 segregations है. 1 घंटा generic, just talk on creativity, just to acclimatize the novice people. Second grade is attend workshops, 3 hours workshop. Okay, workshop will have the content as well as hands-on experience. That is at a generic level.
But if somebody is actually interested in learning the nuances of particular creative techniques, जैसे autobiography, there's another one coming up जो अभी मेरा publish होने वाला है. That's on Kurukshetra model. It will come in the paper and that time it will be highlighted. So all this, these are some of examples. Collage making, that is a simple one which we are doing, collage making. Okay. Then role of cinema in education. That also I have written a chapter in the national book. उसका भी मैं 1 week का ले सकती हूँ. अभी देहरादून में I've been invited to conduct a session of 3 hours on role of cinema in education. Okay. So this is the answer to your first question. Now, number 2, as Priyanka ma'am is asking, how we can bring creativity in our day-to-day family living. I'll just give you a very good example, जैसे कि fitness है. Okay. Fitness and जो हमारा डाइट है उसका मैं एग्जांपल देती हूँ, विच इज एक्चुअली सब रिलेट कर सकते हैं. मेरे जो फिटनेस एक्सपर्ट है, आई हैव अ प्रोफेशनल फिटनेस एक्सपर्ट, आई हैव हायर्ड हिम फ्रॉम अहमदाबाद, जो मेरे ऑनलाइन टीचिंग लेते हैं. यू वोंट बिलीव इट, जो मैं यहाँ पे सेशंस लेती थी, जुम्बा के सेशंस लेती थी एंड ऑल दैट, उससे डेफिनेटली मुझे बेनिफिट होता था. बट सिंस आई जॉइंड दिस ऑनलाइन प्रोफेशनल एक्सपर्ट, who is catering to diverse methods which I am applying every day, that has brought really good results in my fitness. I lost 8 kgs in about 12 months. I lost 8 kgs in 12 months. And of course, the road is not ending. 5 kg और मुझे reduce करना है, and I'm hell bent on this कि I will be reducing. Right? Okay, the connection is lost. Is it there? No, no, ma'am, it's working. Can you hear अच्छा me? ठीक है. Okay. So ये जो फिटनेस Actually, में I हम was देखिए, come with your reply of 8 kg से या मैं सोच रहा था मैं भी आपसे ट्रेनर का रेफरेंस लूंगा आपसे मैं. तो मैं बिल्कुल वो सोच रहा बिल्कुल. था, इसलिए मैं चुप हो गया था. You know what, he applies a lot of diversity in the entire fitness regime, and diversity is something which is related to creativity. अगर वही मोनोटोनस हम रोज एक्सरसाइज करते रहते हैं, our body will respond. ठीक है. Right. सो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते. दूसरा, हमारे डाइट में so much of creativity I am applying in my diet. आई कीप लुकिंग एट द इंस्टाग्राम पे, मैं देखती रहती हूँ कितने सारे हेल्थ फूड्स होते हैं. दे आर देयर सो मेनी मिक्स एंड मिक्सिंग ऑफ some ingredient here and there, and which are actually scientifically proven to help us. So don't you think that creativity is अभी रोज का हम जैसे वो बचपन से दाल चावल रोटी सब्जी दही खा रहे हैं, what do you think? Is it going to help us? No, it will not. Where is the protein in our plate? Where is the protein? How much amount of carbs we are supposed to take? How much amount of fat? कौन से टाइम के दिन में हमें लेना चाहिए? इस सब में हमें सोचना पड़ता है, स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है. और रोज रोज वही चीज हम नहीं खा सकते, हम बोर हो जाएंगे, हमारे जंक लग जाएगा. So we need to bring in lot of creative foods also in our daily routine. Lot of creative exercises. ट्राई करते हैं. किसी दिन मैं डांस भी करती हूँ, ओनली वेस्टर्न म्यूजिक पे डांस करती हूँ. आई हैव हायर्ड अ कोरियोग्राफर फॉर मी. आई एम डूइंग दैट डेलिबरेटली. पहले आई वाज नॉट डूइंग दिस, अब मैं करती हूँ. मेरी एक ड्रेस कम आएगी, एक ड्रेस मैं कम खर्चा करूंगी, पर फॉर माई इनर इंजीनियरिंग, फॉर माई मेंटल वेलबींग, फॉर माई फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, all this is so important. And believe me, because this actually became endorsed more जब मैं ये ब्यूटी पैजेंट में गई. एंड देयर व्हेन आई सॉ प्रियंका मैम, आई सॉ विद्या मैम, सच एनर्जेटिक पीपल. मैंने ऐसे लोग जिंदगी में नहीं देखे थे. क्या तो एनर्जी है. एंड यू नो व्हाट, दे डू व्हाट दे प्रीच. फिटनेस एंड हेल्थ का जो अवेयरनेस मुझे आया व्हेन आई एक्चुअली एनरोल फॉर द पैजेंट कॉम्पिटिशन, आई नेवर न्यू दैट आई एम गोइंग टू एक्चुअली विन द टाइटल ऑफ द पैजेंट 40+ कैटेगरी में. बट मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, आई सॉ कितना क्रिएटिविटी ये लोग अप्लाई करते हैं. 1 साल पहले से किस तरह के वीडियोस हमको दिखाने. व्हाट इज रेनबो डाइट? रेनबो डाइट इज नथिंग बट क्रिएटिविटी. इज इट और नॉट? रेनबो डाइट है क्या? आर्टिकल ऑन आवर साइट आल्सो ऑन Yuvaap. एग्जैक्टली. एंड वो टर्म मुझे इंट्रोड्यूस हुआ था, प्रियंका मैम ने करा था. एंड देन एक्चुअली आई स्टार्टेड सर्चिंग कि यार ये रेनबो डाइट है क्या चीज, लेट मी सी द न्यूरो साइंटिफिक बेसिस ऑफ दैट. आई फाउंड सो मच ऑफ लॉजिक इन दैट. और मैंने अपनी लाइफ में वो करना शुरू करा धीरे धीरे. ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे.
Everything is not actually cross section. It takes time. तो धीरे धीरे करके हमको ये लाना पड़ता है अपने जीवन में, एंड इसमें जो प्राइम एक जो स्पार्क आता है ना, जो इग्निशन आता है ना, जो मोटिवेशन आता है ना, वो किससे आता है? वो क्रिएटिविटी से आता है, और किसी चीज से नहीं आता। मैं आपको लिख के आई कैन मतलब ये तो मतलब ऐसा है ना। I can understand. सो यू नीड, रोज हमको बेदिंग तो करनी है, तो रोज मोटिवेशन भी चाहिए भैया। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत कम लोगों में होता है, बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज नीडेड. What is that? What are you going to do? What, where, how, when? This is what is creativity. So so basically people have to be aware that now, अभी थोड़ा और डीप में अगर हम जाएं तो let me tell you something in which I believe is that creativity is energy. आज आप कितने लोगों को देखते हो are talking about energy? Yes or no, विकास? Correct. No, I mean, very few अल्टीमेटली, people. यस, अल्टीमेटली हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल, हम जो योगा में भी ब्रीदिंग पे वो करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, व्हाट इज ऑल दैट एक्चुअली हिंटिंग टू? इट्स एनर्जी. वी आर बोर्न विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. इट्स अप टू अस कि उसको हम डिम करते हैं या उसको हम रेडिएट करते हैं. So why not bring in something that releases a lot of energy? Explore the diversity. Try to involve in different arts, because that is healing. That is healing. Why we want to be away from this? ये हमारे कल्चर का एक हमारे इंडियन कल्चर, हमारा वेदांतिक जो लाइफ है, उसका ये तथ्य है, उसका सार है ये. Why we want to shun that off? We need to bring that. We need to revive it. Because long term or eternal health, fitness, everything comes with when we are aware of ourselves. कैसे हम अवेयर कराएं बच्चों को कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या है? उनको सोचना पड़ता है ना, उसके लिए उनको सोचने के लिए तरह तरह की चीजें करानी पड़ती हैं, एक्टिविटीज करानी पड़ती हैं, प्लान करना पड़ता है. दैट इज हाउ द थिंग्स हैपन. ओके. Yes, ma'am. So So coming on to that only that part जिसमें आपने जैसे बताया बच्चों को सिखाना होता है. Somebody has asked that जब हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो कई लोग नेचुरली अंदर से टैलेंटेड हो, मतलब क्रिएटिव होते हैं, नॉट टैलेंटेड बट टैलेंटेड सारे होते हैं. बट some people are more creative and some are less creative, and थोड़ा सा जो मतलब यू आर गेटिंग माय पॉइंट राइट, कि कई लोग इनबिल्ट ही होते हैं, तो उनके लिए सिखाना आसान होता है, या इज इट लाइक सबके लिए हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं प्रोसीजर की क्रिएटिव लर्निंग सब? क्योंकि आई नो सबके लिए अलग एक ही हम चीज नहीं यूज कर सकते. फॉर सम पीपल वी विल हैव टू यूज डिफरेंट थिंग्स. तो आपके उसमें आप सबके लिए सेम रहता है, या दैट इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट्स एंड उसके हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं? वंडरफुल क्वेश्चन. एक्चुअली क्या है कि सबके लिए डिफरेंट होता है. जैसे कि मैं मेडिसिन वालों के लिए जब लेती हूँ सेशंस, तो बिकॉज मुझे एग्जाम्पल्स उस हिसाब से देने पड़ते हैं ना. बिकॉज कोई भी चीज मैं ले रही हूँ तो मुझे एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं. एग्जाम्पल से ही वो इमोशनल कॉम्पोनेंट ब्रेन का हिट होता है. ठीक है. मेडिसिन के लिए अलग होता है, डेंटल के लिए अलग होता है, नर्सिंग के लिए अलग होता है, स्टैंडर्ड फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड स्कूल्स के लिए अलग एग्जाम्पल्स होते हैं मेरे. बिकॉज मैं दिल्ली में, गुड़गांव में आई हैव टेकन सेशंस फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स. उनके लिए अलग एग्जाम्पल्स देने होते हैं मेरे. टेक्निक वही होगी पर एग्जाम्पल डिफरेंट होंगे, बिकॉज एग्जाम्पल्स हैव टू बी कॉन्टेक्चुअल. हम एक एग्जाम्पल जो हम नर्सिंग में यूज कर रहे हैं, हम बच्चों में यूज नहीं कर सकते. वहां पे उनको मुझे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं. एंड उसके लिए मैं क्या करती हूँ, आई डू अ प्रीव्यू विद द टीचर्स. पहले टीचर्स को मिलके, एज आई टोल्ड यू, ब्लू प्रिंटिंग एंड प्लानिंग, दैट इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग क्रिएटिविटी. बिकॉज ये क्या है, एक थिन लाइन डिफरेंस हो जाता है डाइवर्जेंस टू कन्वर्जेंट थिंकिंग में. तो हमको बहुत ध्यान से देखना है कि किस इंटरवल ऑफ द क्लास में हम क्या चीज करेंगे और इससे क्या आउटकम होगा और कितना टाइम जाएगा. दैट इज व्हाट इज प्लानिंग, एंड देयर आई कैन हेल्प द टीचर्स इन लोअर एजुकेशन ऑल्सो. आई हैव बीन डूइंग दैट. एंड जैसा विकास आपने पूछा, एक ही चीज नहीं, और अगर अ पर्सन इज टैलेंटेड है पर फिर भी
पर्सन को उसके तरीके सीखने पड़ते हैं। जैसे मैं क्रिएटिव थी बचपन से, पर मैंने क्या करा फिर नेशनल, इंटरनेशनल हर जगह से सीखने की ट्राई करी। दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट। हर तरफ से मैंने अपने हाथ पांव मारे कि नहीं यार मुझे सीखना करे। मैंने अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करे श्रीलंका में। मैंने क्रिकेट खेला था क्लासरूम में, एक टॉपिक को मैंने पूरा क्रिकेट में कन्वर्ट करा था। डू यू नो दैट? सो इंटरेस्टिंग। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आज वही बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर्स बन गए हैं। लेकिन वो बच्चों से जब भी बात होती है दे ऑलवेज टेल कि मैम हमको वो कार्डियोवास्कुलर क्रिकेट आज तक नहीं भूलता आपने जो क्लास में कराया। एंड आई हैव प्रेजेंटेड दिस इन फ्रंट ऑफ स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने उनको इसलिए प्रेजेंट करके ये भी नहीं बोला कि मुझे प्राइज दो। मैंने उनको ये बोला जाके, ज्यूरी में जो लोग थे, श्रीलंका की बात मैं बता रही 2014 की, मैंने उनको ये जाके बोला कि सर मैंने ये क्रिएटिव टेक्निक क्लास में अप्लाई करी है, इसके लिए मुझे टाइम लगा था काफी फॉर्मुले। आप मुझे बताओ इसमें क्या फ्लॉज हैं, प्लीज टेल मी, बिकॉज फ्यूचर में मुझे ये करना है, मुझे इंप्रूव करना है। The jury from UK, he had come from UK, I'll just tell you the name, Dr. Kevin Eva. He told me कि मैम, अनुराधा मैम, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। This, the way you have done this, it's a good project. How many of teachers are doing that? Tell me. प्रोजेक्ट करने में खुद ही 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। कितने लोग करते हैं? स्कूल लेवल पे मैं चाहती हूँ कि टीचर्स करना शुरू करें। कितने लोग करते हैं? दैट्स वेरी सैड। कितने लोग करते हैं? मेरे आप पेपर्स देखिए, प्लानिंग होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। ये सब सीखना पड़ता है। इसको मैंने सीखा है। आई हैव गॉन टू फिलाडेल्फिया, आई हैव बीन टू फिनलैंड, आई हैव बीन टू श्रीलंका, आई हैव बीन टू यूएसए, आई हैव लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाट आई एम ऑफरिंग कि हम अगर सीखना है तो यू कम टू मी, आई विल हेल्प यू लर्न दिस। सो जैसे कि हम बोलते हैं ना, इफ नॉलेज इज द सुपर पावर, यू नो, इन एजुकेशन, creativity, if knowledge is the superpower and the, you know, brain, creativity is the heart of education. So now, before closing this session, I would just take the last question, जिसमें कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आजकल की लाइफ में वी हैव टू डू कंटिन्यूअस लर्निंग, वी हैव टू आई मीन डेवलप न्यू स्किल्स ऑलमोस्ट एवरी डे। आपने 3 अपनी टेक्निक हमें बताई, जो कि हाँ डिटेल में हम आपसे बाद में समझेंगे, कार्डियोवास्कुलर, क्रिकेट एंड स्नेक एंड लेडर एंड Autobiography. ऑटोबायोग्राफीज, ये हम कैसे यूज करेंगे। एक आप अपना सीक्रेट टेक्निक हमें देके जाइए आज, जो कि हमारे व्यूअर्स अपनी डे टू डे लर्निंग में यूज कर पाए। डे टू डे लर्निंग में जो वो यूज कर पाए, इसकी कोई भी चीज आप जब भी पढ़े या पढ़ाएं, उसमें आप इमोशंस ऐड करिए। उसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ट्राई टू ऐड इमोशन, ट्राई टू मेक इट लाइव, तभी वो प्रोडक्टिव होगा। जब तक आप उस चीज को आप मतलब एक यू नो इमटेरियल थिंग की मतलब आप सोचते हैं कि यार इसको एक डेड ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो, नहीं। वट एवर यू आर टीचिंग, जितना हो सके ट्राई टू टॉक विद द स्टूडेंट्स। डोंट गो ऑन की स्टीरियोटाइप की यार इतना पढ़ाना है, इतने घंटे में खत्म होगा। एंगेज करिए स्टूडेंट्स को, जितना हो सके उनके दिमाग खुलने दीजिए। टॉक टू देम, ask them their life experiences related with your topic. अगर आप मान लो किसी प्लांट के बारे में पढ़ा रहे, स्टूडेंट को पूछिए आपने कहाँ देखा, हैव यू सीन दिस प्लांट एनीवेयर? स्टूडेंट बोले नहीं देखा, उसको और ट्रिगर करिए, कहाँ वहां पे गए थे, उस जगह पे देखा था ऐसा प्लांट? अच्छा चलो बताओ कौन से प्लांट्स तुमने देखे? दे विल कम अप विद समथिंग। अच्छा बताओ वो प्लांट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, वो बताएंगे। फिर ये प्लांट उससे कैसे डिफरेंट है, लेट देम टेल यू। यू आर देयर एज अ फैसिलिटेटर, यू आर नॉट देयर टू स्पून फीड देम। दैट इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू ट्रिगर देयर ब्रेन सेल्स, एंड दैट विल, यू नो, वो किसी भी सिचुएशन में लाइफ में रहेंगे ना, दिस इज लाइफ स्किल, तुरंत उनका दिमाग तेजी से भागेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी के बाद आती है क्रिटिकल थिंकिंग। वो तभी आएगी जब आप उस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो। आप उस एनवायरनमेंट में जब रहे नहीं हो, आपको किसी टीचर ने उस वैसा एनवायरनमेंट दिया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आज इसीलिए मैं बाहर आके ये यू नो सेशन कर रही हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर आउटसाइड, व्हेन यू आर विद द नेचर, इट गिव्स यू दैट
दैट एनर्जी। आप पूरे दिन, मैं खुद मेरे स्टूडेंट्स को देखती हूँ, 9 बजे से लेके 5 बजे तक दे आर इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट। जस्ट इमेजिन कितना ट्रोमैटिक होता है। डोंट यू थिंक इट्स ट्रोमैटिक? आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, जस्ट कोई आपको बस पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। मैंने फिनलैंड में देखा, ये एक सीक्रेट मैं बता रही हूँ, आई हैव सीन। 1 घंटे की क्लास होती है ना, उसके बाद स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सब बाहर आते हैं खेलने। मेरे होटल जहाँ पे मैं रुकी थी उसके जस्ट सामने मैं ये चीज देखा। फिर मैंने टीचर्स को पूछा कि 1 घंटे के बाद फिर आप एवरी वन आर यू आर रिलीजिंग द स्टूडेंट्स? दे सेड यस, दिस शुड बी देयर। अगर क्लास में प्लांट्स की बात हो रही है तो बच्चों को फॉरेस्ट में लेके जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस आर डूइंग दैट? हाउ मेनी ऑफ अस वांट्स टू स्पेंड ऑन दैट? नहीं करना है। खर्चा हो जाएगा ज्यादा, एनर्जी वेस्ट होगी। कौन जाएगा बच्चों को एस्कॉर्ट, कौन करेगा? पूरे तरह के टेंशन, किसी बच्चे को ये हो गया, वो, अरे क्या होगा? बी रेडी टू टेक सम रिस्क एटलीस्ट। उनको बाहर ले जाओ, उनको वो याद रहता है। वो होने के बाद उनको आप स्क्रैप बुक्स बनवाइए। टेल देम क्या देखा, उसका आर्ट वर्क बनाओ, बनाओ अपने लिए, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव सीन। कोई नहीं करता, बट आई एम हैप्पी टू शेयर दिस, आई डू दैट। So मेरे even in मेडिकल क्लासरूम्स में भी मैं करती हूँ बच्चों को। वी ऑल्सो स्पेंड मी टाइम ऑल्सो। कौन सा टीचर ऐसा है जो बच्चों के साथ रिचार्ज कैफे जाता है? आई एम गोइंग। आपको मालूम है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। हमें जब हम इनफॉर्मली बच्चों से मिलते हैं ना, हमें पता चलता है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हमें कुछ पता ही नहीं चलता है बच्चे किस परेशानियों से जूझ रहे हैं, और इसलिए वो पढ़ नहीं पाते। even तो in ये case of सीक्रेट भी मैं schools, दे रही हूँ टीचर्स को। आप अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मंथ में एक बार बाहर जाइए, उनके साथ चाय कॉफी, हेल्दी चीज खाइए। हेल्दी चीज, बिकॉज आप हेल्दी चीज खाओगे तो दैट इज ऑल्सो रोल मॉडलिंग। यू आर टेलिंग देम कि देखो ऐसा होना चाहिए, नहीं कि जंक फूड खाइए। हमारे कॉलेज में दे हैव ऑल दिस भजिया एंड ऑल दैट। मैं नहीं खाती हूँ, कभी आप पूछ लीजिए भजिया वाले को। मैं खाती नहीं हूँ भजिया, बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और अगर मैं ही वो चीज करूंगी तो मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगी? हमको रोल मॉडल होना पड़ेगा ना बच्चों के सामने। मैं काफी बार दिन में एक टाइम फूड लेती हूँ, बिकॉज आई फॉलो सदगुरु। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमको अपना खाना कम करना पड़ता है। तो इस सब के पीछे लॉजिक है। और वो कैसे मैं समझाऊंगी बच्चों को? सदगुरु का एक वीडियो दिखा के, सात्विक आहार क्या होता है उसकी इंपॉर्टेंस बताना। जब तक आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी बाय डूइंग सम एक्टिविटीज, बच्चों को लगे ठीक है यार, हो गया, दैट इज ओनली फॉर मैडम। सात्विक फूड उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। सब समझना जरूरी है। लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, लाइफ इज सो सिंपल, बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज हमें काफी चीजें पता ही नहीं होती। एंड आई एम श्योर आपका जो ऐप है, आज मैंने जो सबको बताया है, 101% दैट्स गोइंग टू सिंप्लीफाई द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स। बिकॉज ये सब मेहनत से, ये जो शिक्षा आज हम डिसेमिनेट कर रहे हैं, इट इज नॉट ऑन एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है। 25 साल की मेहनत के बाद मैं ऐसे बोल सकती हूँ कन्विक्शन से। इवन वी कैन रिलेट मैम, जैसे अगर आप जो बता रहे थे कि बाहर जाना होता है, तो अगर जो मुझे स्कूल में कुछ भी अगर मुझे याद होगा तो मुझे वही होता है कि जब मेरे को टीचर्स वगैरह अम्यूजमेंट पार्क लेके गए थे या जू लेके गए थे टू लर्न समथिंग न्यू। वो हाँ, याद लेकिन रहता है आपको। टीचर्स को वो परेशानी रहती है कि बाहर जाना इज अलग ही लेवल की हेडेक है, सबको मेंटेन करना, सबको कि कोई बच्चा इधर उधर ना हो जाए। लेकिन हाँ, जो बच्चों को याद रहता है वो वही रहता है कि वो, हाँ, हम इस ईयर में यहाँ गए थे घूमने, इस ईयर में हमें टीचर्स यहाँ लेके गए थे, तो याद वही हम्म। रहता है हमें स्कूल में। अभी देखिए विकास, माय सन हैड गॉन टू हिमाचल, ये तीर्थन वैली में। वहां पे उसने पूरा एटमॉस्फेयर देखा, उन्होंने वहां पे ट्रैकिंग करी। इतने अच्छे उसके मेमोरीज डेवलप हुए ब्रेन में, इतने अच्छे पैटर्न्स डेवलप हुए। उसके बाद जब वो आया तो मैंने अहमदाबाद में उसको एक डिबेट कंपटीशन में भेजा। जब वो वहां की यूनिवर्सिटी में गया, ही इज इन 9th स्टैंडर्ड। उसको जिस दिन मैं लेने गई ना विकास, आई विल टेल यू, मैं उसके फेस पे, उसकी आईज, आई कुड जस्ट सी द हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। एंड मैंने बोला कि बेटा, यू एंजॉयड द डिबेट सेशन, डिफरेंट कंट्रीज पे डिबेट करना था उसको। ही वाज जस्ट ऑल गागा अबाउट इट कि मम्मी कितना यहाँ एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था, एंड पीपल वर देयर टू एनकरेज हिम।
डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बारे में होमवर्क करके गया था, असाइनमेंट्स करके गया था. सो व्हाट इज ऑल दिस इज अवे फ्रॉम मोनोटोनी. हम correct, रोज ये सब चीजें ला सकते हैं अपने स्कूल्स में, अपने करिकुलम्स में. आर वी ऑल रेडी फॉर इट? द क्वेश्चन इज दैट. correct, ma'am. So it was a really great session, ma'am. Can we close this now? आपसे बात करके Just तो a इट्स second. लाइक वी आर फीलिंग की बात तो आई कैन कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग बट I know वी आर रनिंग it's शॉर्ट ऑफ actually टाइम endless, endless है ये तो. राइट so but we will leave all the details in description जो भी details if people want to get in touch they can always contact us and मेरे लिए तो आज बहुत exciting session था and I Thank hope you. सबके लिए रहा होगा It was and same for me. The same vibes I was getting from you and your entire team. I am absolutely flabbergasted and so thankful to the entire UA team and all the crew members there. Thank you so much. thank you so much and to our viewers do like subscribe to our page on whatever platform you are watching and to keep getting updates You can and thank even you so share much. my mobile number with the viewers. They can contact me if they want any courses or workshops. Okay, ma'am. We will आपके पास है ही share. मेरा नंबर, मोबाइल Yes, we नंबर. will share your Instagram, your website, and your phone number, everything in description itself, so Sure, that anybody who want to get in touch, not an they will issue. contact That's you. okay. Right, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so Thank you much. so much. Thank you so much. Thank you, Bye. ma'am. Thank you. Bye. 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 Bye.